Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel which is by GS Boy. देखो students, previous class से पढ़ाई थिला magnetic field intensity due to a circular coil carrying current. Okay students, so आज हमें देखिबा application 3 देखो आज application 3 पढ़िबा application 3 टा कहार application देखो application 3 देखो कहार application बायोट-सावर्ट्स लॉ मन बायोट-सावर्ट्स लॉ बायोट-सावर्ट्स लॉ एप्लीकेशन ओके बाइट्स अबाउट एप्लीकेशन 3 देखो कोन अछि एप्लीकेशन 3 टा हेडिंग दे दियो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कहले भी चलिबो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट देखो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर coil और लूप कहले भी चलिबो magnetic field at any point on the axis of a circular coil carrying current देखो simple definition magnetic field at any point जे कोनोसी पॉइंट रे on the axis रहइबो at any point on the axis रहइबो देखो पॉइंट p टा of a circular coil carrying current देखो magnetic field at any point on the axis of a circular coil carrying current. Dear students, तो फर्स्ट स्टार्ट करी फेर लॉन्ग क्वेश्चन तो एबे देखो डायग्राम बुझि दियो मने कर एबीसीडी गुडे प्लेन देखो एबीसीडी इज द प्लेन निया जिते प्लेन एटी कोन आइछि देखो एटे सर्कुलर कॉइल देखो कैरिंग करंट आईएम कोनटा फ्लो होछि देखो एंटीक्लॉकवाइज करंट फ्लो होछि एंटीक्लॉकवाइज रे आईएम कोनटा फ्लो होछि ए डीएल होछि स्मॉल एलिमेंट एट एक्स डीएल होछि कोन स्मॉल एलिमेंट एट एक्स रे देखो सो डीएल एक्स कोन डीएल एक्स भी होछि गुड स्मॉल एलिमेंट और करंट एलिमेंट एट वाई देखो डीएल होछि कोन करंट एलिमेंट एट एक्स रे देखो एट एक्स रे सो डीएल एक्स कोन करंट एलिमेंट एट वाई रे देखो बुझि होछि डीएल एक्स माने कोन करंट एलिमेंट एट वाई रे then O माने कोन सेंटर और A होची रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल A होची रेडियस then P is a point it is distance x from the center of coil O मान P पॉइंट कोन अछि P पॉइंट रे एक्सिस रे अछि देखो एक्सिस ऊपर P is a point on the axis distance कोन x distance at O रू और एटा r distance देखो px हला r वेक्टर तो py कोन r वेक्टर देखो कंपोनेंट देखो P पॉइंट रे एटा pm गुडे कंपोनेंट db cos phi pn गुडे कंपोनेंट कोन db dash cos phi से बोलिया यार हॉरिजॉन्टल db sin phi db dash sin phi देखो बुझि होछि एटा होय ds माने db कंपोनेंट देखो pq रे db कंपोनेंट और pr होछि कोन db dash कंपोनेंट ओके एटी थ्योरी कोन हबो देखो हेडिंग देखि दे स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एटी थ्योरी हबो देखो let us consider a circular coil of radius small a देखो of radius small a okay let us consider a circular coil of radius a having its center at O रे देखो सेंटर having its center at O तापर let P be a point situated on the axis at a distance r sorry at a distance x about at a distance x at a distance x from center of the coil O देखो let P be a point situated on the axis at a distance x from center of the coil O थर अछि देखो और at a distance P टा हला at a distance r from any circumference of the point देखो r माने कोन गुडी सर्कमफरेंस पॉइंट देखो let P be a point situated at a distance E be a point situated
on the axis at a distance x from center of the coil O, or कोई पर or at a distance r from any circumference of the point. ओके स्टूडेंट देखो बोल से देखो, let P be a point situated, P the point ଅଛି देखो, let P be a point situated on the axis at a distance x from center of the coil O or at a distance r from any circumference of the point. Okay students, next कोन हबो देखो, next हे जीवो let I be the current, let I be the current flows on the circular coil, flows on the circular coil. देखो, let I be the current, I the current, I be the current flows on the circular coil, माने circular coil रे I amount of current flow होची. Okay students, next हमें देखिबा देखो, let I be the current flows on the circular coil. Next देखिबा, if dB vector is the magnetic field, magnetic field at P, देखो dB vector is the magnetic field at P due to current element, due to current element dl, देखो current element dl, current element dl at x-ray, देखो at x-ray. If dB vector is the magnetic field at P, okay, at P due to current element dl at x-ray, तो according to Bird-Sabat's law, dB vector का formula कौन है देखो, mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square पे देखो जानिछो ideal sin theta by r square, एटी थीटा केते जो सर्कुलर लूप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट दिस, तो कौन हला दैट इज dB factor इज इक्वल टू देखो हला mu 0 by 4 pi ideal sin 90 डिग्री by r square, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री 1, देन कौन हला देखो, देन dB factor इज इक्वल टू हला देखो mu 0 by 4 pi ideal by r square, give equation number 1, देखो equation 1 दे दियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री 1, तो ideal into 1 तो ideal हला देखो, dB vector का वैल्यू कौन हला, dB vector is equal to mu 0 by 4 pi ideal by r square. Similarly देखो, similarly dB dash vector is the magnetic field at P due to current element dl dash, देखो dl dash जीवो, dl dash at y रे, देखो at y रे, dB dash is the magnetic field at P due to current element dl dash at y रे, एटी फार्मूला कोन dB dash रो फार्मूला देखो सेम, एटी सेम ही जीवो mu 0 by 4 pi ideal by r square, देखो एटी भी हम r नहीं छु ideal by r square, इक्वेशन 2 दे दियो, give equation number 2, equation 1 और 2 कोन पाइलो, from equation 1 and 2 रू देखो कोन मिलला, from equation 1 2 रू that is magnitude of dB vector is equal to magnitude of कोन हला dB dash vector, देखो एटा हो तर कंक्लूजन टा, इक्वेशन 1 और 2 रू कोन मिलला, from equation 1 and 2 रू मिलला, देखो मॉडुलस ऑफ dB vector is equal to कोन हला मॉडुलस ऑफ dB dash vector. ओके स्टूडेंट्स देखि दियो, एटा इक्वेशन 1 को मन रखो, dB vector is equal to mu 0 by 4 pi ideal by r square, एटा यूज हेबर का इक्वेशन 2 दिया आइछि. नेक्स्ट हम कंपोनेंट मान लिखिबा, देखो नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट resolving dB vector into two components, कोन कोन देखो resolving मान तयारी हला, resolving dB vector into two components कोन कोन, नंबर 1 देखो फर्स्ट है dB cos phi along vertical direction, along vertical बा along pm कहि पारो, dB cos phi along pm और along vertical से भलिया. नंबर 2 देखो dB sin phi कोन हबो along horizontal, देखो along horizontal, देखो dB cos phi vertical और dB sin phi को horizontal, देखो along vertical गला, तापरे resolving
नेक्स्ट आउ कोन रिजॉल्विंग डिविडेक्स फैक्टर इनटू टू कंपोनेंट एटा दुइटा देखि देखो इनटू टू कंपोनेंट्स रिजॉल्विंग डिविडेक्स फैक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स कोन कोन नंबर 1 देखो इटी डिविडेक्स cos phi डिविडेक्स cos phi along एटा वर्टिकल किंतु कोन हबो एटा डाउनवर्ड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन एटा होची डाउनवर्ड्स तळकु जाउची देखो डाउनवर्ड्स तळकु डाउनवर्ड्स एटा कोन वर्टिकल माने अपवर्ड देखो एटा अपवर्ड लिखि देबो एटा अपवर्ड्स db cos phi along vertical बा upward ऊपर को जाउची देखो upward db cos phi ऊपर को जाउची तो db dash cos phi कोन डाउनवर्ड db dash cos phi along vertical डाउनवर्ड हला देखो से बडा नंबर 2 कोन हबो देखो db dash sin phi कोन हला along horizontal देखो बहुत सिंपल db cos phi along vertical एटा upward सेकंड कोन हला db sin phi along horizontal db रो एटा सो db dash कोन हला देखो नंबर 1 db dash cos phi along vertical डाउनवर्ड हला देखो देन db dash sin phi along horizontal ओके स्टूडेंट्स एबे कोन हला देखो ए कंपोनेंट को लक्ष्य करो along pm db cos phi आ db dash cos phi एटा कोन इक्वल एंड अपोजिट से माने कोन बे कैंसिल हे जिवे देखो से विषय हम लिखिबा नेक्स्ट लिखि दियो the component of db along pm and along pn are equal and opposite देखो देखिए डायग्राम इक्वल एंड ऑपोजिट so they cancel each other देखो कैंसिल हे गले देखो the component of db along pm कौन db cos phi अछि देखो then component of db dash the component of db along pm and along pn and लिख दिया and component db dash and component db dash along pn are equal and opposite so they cancel each other seven cancel he gole so they cancel each other देखि दियो देखो the component of db along pm db cos phi देखो db cos phi से भलिया and component db dash component of db dash ला component db dash along pn रे कोन अछि db dash cos phi एटा कोन इक्वल एंड अपोजिट देखो कोन db is equal to db dash अछि मान समान the component of db along pm and component of db dash along pn are equal and opposite so they cancel each other बुझियला कैंसिल हे गले माने दिस कैंसिल खाली कोन रहला एटा रहला db sin phi db dash sin phi रहला देखो नेक्स्ट the total magnetic field at p due to whole coil total coil देखो total magnetic field at p due to whole coil कोन हबो आंसर देखो एटा b बाहर जीवो b is equal to integration 0 to b db sin phi इंटीग्रेशन जीवो देखो is equal to integration कोन हबो 0 to 2 pi a 2 pi r हबो रेडियस में a नहीं 2 pi a db रो वैल्यू केते db रो वैल्यू इक्वेशन रे पाइछु देखो db रो वैल्यू केते पुट करो mu 0 by 4 pi ideal by r square देखो ideal by r square into sin phi अछि देखो into sin phi देखो एटी कोन ला यूजिंग इक्वेशन 1 कर दो साइड रे यूजिंग इक्वेशन 1 टा मैं यूज करछि देखो इक्वेशन 1 टा यूज करा वाला ओके इक्वेशन 1 टा यूज करा वाला b is equal to integration 0 to b db sin phi is equal to integration 0 to 2 pi a करिवो mu 0 by 4 pi ideal by r square into sin phi ओके स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रेशन सॉल्व करो इक्वेशन सॉल्व करो देखो तो b is equal कोन मिला b is equal देखो कांस्टेंट कोन mu 0 by 4 pi आइडियल बाय r स्क्वायर कांस्टेंट सब कांस्टेंट आइडियल बाय r स्क्वायर सब कांस्टेंट इंटीग्रेशन कोन sin phi सॉरी sin phi भी कांस्टेंट देखो also देखि दिया एठी है देखो इंटीग्रेशन 0 to 2 बा कांस्टेंट देखो कांस्टेंट है देखो mu 0 by 4 pi
এটি কোন হবে দেখো i by r square constant i by r square sin phi টা constant দেখো ইন্টিগ্রেশন কোন হবে ইন্টিগ্রেশন dl দেখো ইন্টিগ্রেশন dl 0 to 2 pi a 0 to 2 pi a দেখো এটা কোন কনস্ট্যান্ট মিউ 0 বাই 4 পাই কনস্ট্যান্ট i বাই r স্কয়ার কনস্ট্যান্ট sin phi বি কনস্ট্যান্ট sin phi বার করলা তাহলে dl ইন্টিগ্রেশন হলো dl মানে কোন 0 to 2 pi a পুট করিব নেক্সট হলা দেখো মিউ 0 বাই 4 পাই i বাই r স্কয়ার sin phi ইউ dl র কোন l হলা মানে কোন 2 pi a পুট করিব লিমিট পুট করলে 2 pi a হবে দেখো 2 pi a ঠিক আছে তো মাল্টিপ্লাই করলে কোন হলা দেখো মিউ 0 বাই 4 পাই 2 pi ia by r square into sin phi দেখো এটা ইকুয়েশন 3 দেই দিও গিভ ইকুয়েশন নম্বর 3 দেখো ভেরি সিম্পল dl র কোন হলা l র কোন লিমিট পুট করিব 2 pi টা পুট করিব দেখো 2 pi টা লিমিট পুট করিব দেখো dl র l হে ଯିବ l জায়গায় কোন 2 pi পুট হবে দেখো তো ঠিক সে মাল্টিপ্লাই কোন b র ভ্যালু বাহারছি দেখো b র ভ্যালু কোন হচ্ছে মিউ 0 বাই 4 pi 2 pi ia by r square into sin phi ওকে এবে দেখো ইন ট্রায়াঙ্গল OPX रे इन ट्रायंगल OPX रे sin phi रा वैल्यू कोन आबा देखो OPX से sin phi रा वैल्यू केते आबा OPX रे sin phi रा वैल्यू कोन P by H परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर माने कोन OX बा हाइपोटेनियस माने कोन H XP देख OX by XP OX रा वैल्यू केते हम A नै छे और XP रा वैल्यू केते R A by R देखो एटा इक्वेशन नंबर 4 दे दियो इक्वेशन 4 कोन करबा इक्वेशन 3 रे पुट कर देबो लिखि दो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3 रे पुट कर दियो वी गेट कोन हबा पुट कला परे दैट इज b is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi ia by r square into sin phi रा वैल्यू केते a by r पुट कर देखो sin phi जगह a by r पुट हला नेक्स्ट इक्वेशन 4 जाई छी देखो b is equal to mu 0 by 4 पे मल्टीप्लाई करो 2 pi ia square by r cube इक्वेशन नंबर 5 दे दियो गिव इक्वेशन 5 4 0 5 दे दियो एबे कोन हबो देखो आल्सो अगेन इन ट्रायंगल OPX ट्रायंगल रे एटी r रा वैल्यू कोन हबो देखो r रा वैल्यू मान इन ट्रायंगल OPX राइट ट्रायंगल रे देखो एटी कोन हबो r is equal to कोन r is equal हाइपोटेनियस तो कोन हबो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कोन हला देखो r is equal to हे गला परपेंडिकुलर माने कोन p स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर हबो रूट ओवर माने हाफ पाइथागोरस थ्योरम देखो এটা হচ্ছে परपेंडिकुलर এটা হচ্ছে বেস এটা হচ্ছে হাইপোটেনিয়াস তো s s ইজ ইকুয়াল কোন হবে p স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার রুট ওভার তো p মানে কেতে a নিচে परपेंडिकुलर a ଆଉ বেস মানে কোন x নি আইছি দেখো a স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার হাফ ইকুয়েশন নম্বর 6 করে দাও এবে 6 টা কোন করব 5 রে পুট করো লিখে দাও ইউজিং ইকুয়েশন 6 ইন ইকুয়েশন নম্বর 5 6 টা 5 রে পুট করে দিও পুট করলে কোন মিলবা দেখো আর জায়গায় ভ্যালু পুট করো আর জায়গায় ভ্যালু পুট করলে মিলবা দেখো b is equal to b mu 0 by 4 pi 2 pi ia ର স্কয়ার বাই r কিউব ଅଛି r কিউব ର ভ্যালু কেতে r কিউব মানে স্কয়ার প্लस x স্কয়ার এটা হাফ ଅଛି দেখো फिर কিউব হে ଯିବ দেখো মানে 3/2 হে ଯିବ দেখো तो b ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା b is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi ia square by a square plus x square ର 3/2 ओके इक्वेशन 6 जाइथरा माने 7 दे दिएटा गिव इक्वेशन नंबर 7 ओके देखो b is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi ia square by x square plus x square ର 3/2 देन लिखि दो if the coil consists of n number of turns हेले कोन अब n नंबर टर्न्स को n टा मल्टीप्लाई जिबा देखो b रे फुल कोन अब इक्वेशन 7 becomes इक्वेशन बा 6 जहा तो मैं नेमिंग करी माने इक्वेशन को देखि के दे देबो इक्वेशन 7 becomes कोन है इक्वेशन 7 टा देखो एटा b is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi n ia square by a square plus x square रो 3/2 देखो इक्वेशन नंबर 8 दे दियो गिव इक्वेशन नंबर 8 देखो किछ ना खाली n टा मल्टीप्लाई हला b is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi n i a square by this much एबे कोन करबा ए 2 pi 4 pi कैंसिल करो pi pi कैंसिल 2 रे कटिबा देखो आंसर भी कोन हबो एटा भी आंसर कहि पारो तमे
तो b इज इक्वल टू एटा आंसर है एटा भी आंसर ही पारे b इज इक्वल कोन है 0/4 पाए 2 पाई ni a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 एठी भी कोन हबो एटा काटी दियो 0/2 हे जिवो देखो 2 ni a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 एटा भी आंसर देखो এটা হচ্ছে आंसर देखो इक्वेशन नंबर 9 दे दियो ओके हला इक्वेशन 9 टा कोन इक्वेशन 9 इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of a circular coil carrying current लिख दियो equation 9 is the expression for magnetic field intensity magnetic field कोई बारो magnetic field at any point equation 9 is the expression for magnetic field at any point on the axis of a circular coil carrying current देखो simple এটা হচ্ছে आंसर equation 9 is the expression for magnetic field at any point on the axis of a circular coil carrying current okay students next class पढिबा next class होची एम्पियर सर्किटल लॉ next class पढिबा हम कोन एम्पियर सर्किटल लॉ okay students ओके जदि ए क्लास को जदि भल लागुची माने काइंडली समस्त लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दियो और पाखर थिबो बेल आइकन को दबाई दियो ओके स्टूडेंट जदि क्लास को जदि भल लागुची माने काइंडली समस्त को शेयर कर दियो ओके स्टूडेंट्स बाय